Can you see the screen? Yes, sir. Okay. All right. So let me touch the oscillators part a little more, right? And then we will move quickly today to also some more application situations of the uh, IC555, right? So this is okay. I mean, coming back to the general circuit of the Wien-Bridge oscillator, I hope if I don't use resistors, if I, instead of that, if I use general impedance, Z1, Z2, Z3, and Z4, I get this general circuit configuration for Wien-Bridge oscillator, correct? So I'm writing this as Z1, this as Z2, this as Z3, and this as Z4. Is that okay? Now what I do, please be available and at least respond. It's extremely demotivating and when you people don't respond. So what I'm doing, you see, as you can see here, I'm breaking this circuit. यहाँ से इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है? और तोड़ने के बाद I'm making this as the input of the amplifier, which is actually this point, and this as the output of from the Z3 Z4 combination. So after breaking, I have broken the loop, right? I have broken the loop. Now you can see the 2 points. If I mark the 2 points as, let us say this is point number 1 and this is point number 2. So this will be point number 1 and this will be point number 2. I hope this is convincing. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So this is Z2, this is Z1, Z3, and Z4, right? Now I want to find out, loop break कर दिया हमने. Now here I have the, I'm writing this as VI and this as VO. पर इसमें सर Z4 ऊपर वाला नहीं होगा? Oh, you're right. You're right. Absolutely right. Thank you. So this is now Z4 and this is Z3. Okay. So I want to find out VO by VI, right? एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आप यहाँ पर इसको 2 पार्ट में कंसीडर कर सकते हो, दिस एंड दिस, ठीक है? और ये जो पहला पार्ट है, दिस इज एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, for which V by VI you can write. So V by VI for the first part would be 1 plus Z2 by Z1. Is that right? And Yes, then, sir. and then VO by V for the second part would be Z3 by Z4 plus Z3. Is that okay?
Yes, sir. Yes, sir. Now, if you multiply both, correct? आपको मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसे सेक्शंस ऑप एम्प के, ठीक है, मैं यही बता के फिर उसको मिटा दूंगा. Suppose there is one circuit, that's an op amp, right? And now it has some network here, N, in the inverting loop. There is another network, N2. This is N1 and this is N2 in the non-inverting loop, right? It's a big network of RC, right? RLC, whatever. And likewise, you have another op amp circuit. So you have, let us say, N3 in the inverting loop, then you have N4 in the non-inverting loop. ठीक है? और अगर ये इसका आउटपुट यहां से इधर कनेक्टेड हो, राइट, और इफ दिस इज लेट अस से VO, और यहां कहीं पर भी इनपुट मान लो, सपोज आई एम मेकिंग दिस एज इनपुट VI, या यहाँ पर कोई इम्पीडेंस भी हो सकता है, करेक्ट, और देन यू हैव VI. आई वांट टू फाइंड आउट VO बाय VI. तो बीच में यहाँ पर इसको लूप को ब्रेक करके आई कैन ऑलवेज मेक, एंड ऑफ कोर्स यू नो, एक चीज और, सॉरी, लेट मी slightly modify. Suppose here you have another network here, N5, right? अब इसको अगर हमें पता करना है VO by VI, तो हम इसको कहां से लूप ब्रेक करेंगे? यहां से ब्रेक करना इज प्रोहिबिटेड. यू कैन नॉट ब्रेक हियर. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो आउटपुट, इस N5 के बाद का जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट क्या होगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, right? So never break the loop here. Instead, what we will do, we'll break the loop here. ऑप एम्प के आउटपुट पे लूप ब्रेक करना आसान है. यहां पर so this point will be voltage V, and then you can find V by VI and then VO by V, right? So that's an easy option. You cannot break the loop after N5. Is that okay? Yes, sir. Right. So that is what is very very important. And secondly, अगर ये input consider करना हो, ठीक है ना? Okay, fine. And that's all I wanted to tell you about the breaking the loop situation. After having broken the loop in this circuit, we already have a circuit below, and from which we can find out V by VI and VO by VI. And when you multiply this, you get VO by V. So finally, what will be VO by V? VO by VI will be Z3 into Z1 plus Z2 divided by Z1 into
Is that okay? Is that right? Yes, sir. Now, in this circuit, in the first circuit here, in this first circuit, when the loop is not broken, what is VO and VI? They are the same. So in closed loop, VO by VI is equal to 1. This is the closed loop situation. And when this is equal to 1, then from this, if you cross multiply, what you get is Z3 into Z1 plus Z2 equals Z1 into Z3 plus Z4. And from this, what you get? You get one characteristic equation, which is Z2, Z3 minus Z1, Z4 equals to 0. This is what you get the characteristic equation. Is that okay? Yes, sir. Now what I do, I'm replacing जो ऑसिलेटर हमने बनाया था वो वहां Z1 क्या था? Z1 R1 था, Z2 क्या था? R2 था, Z4 क्या था? It was R series C. Z3 क्या थी? Z3 was सब पैरेलल में R parallel C. ठीक है? अब let us write that Z1 is R1, Z2 is R2, Z3 will be the series combination का जो वो होगा सर Z3 पैरेलल में है R3 by Z3 parallel में है, right? Z3 is okay. तो जो इसका parallel combination का जो वो होगा that is going to be R3 divided by 1 plus S C3 R3. Is that okay? And Z4 will be what? सर सीरीज कॉम्बिनेशन 1 plus S C4 R4 divided by R SC4. Divide by. Is that okay? Yes, sir. Now you have to substitute all these things in characteristic equation. So characteristic equation now will be R2 times Z3. R3 divided by R3 minus R1 into SC4 R4 divided by SC4 equals to 0. Then you have to rearrange it और इसको एक इस फॉर्म में ले आना है that S square plus S into A minus B plus C equals to 0. Can you do that now? Yes, sir. So when you do this और ये करने में you have to substitute that C3 equal to C4 equal to C, R3 equal to R4 equal to R. ये करके then find out this equation. So what you will get is S square plus S by RC times
2 minus R2 by R1 plus 1 over R square C square equals to 0. You will get this. Is that right? Is that right? Yes, sir. Okay, so that means what? That means this characteristic equation, finally, this one, gives you condition of oscillation. What is condition of oscillation? That R2 by R1 is equal to 2. And when you substitute that, then you have frequency of oscillation omega naught square is 1 by R square C square. Is that right? So what I have done, I have now, please see it carefully. Here I have chosen Z1 as R1, Z2 as R2, Z3 as R3 series as parallel combination of RC and Z4 as series combination of RC. अगर हम इसको अब ये कितनी पॉसिबिलिटी है ये जो कॉम्बिनेशंस हैं सीरीज पैरेलल इनको कहीं कहीं रखने की सर 16 16 पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा हो सकता है कि हम Z1 को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें और Z2 को सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें और Z4 Z3 को R1 R4 R3 कर दें and then try to find out by using this characteristic equation. This is a general equation. Then you substitute and then find out if you get something like this. What is important that every time you substitute Z1, Z3, Z4, सबसे पहले Z2, Z3 minus Z1, Z4 लिखा जाए. This is the characteristic equation. इसमें Z2, Z3, Z1, Z4 को आपको तमाम जो 16 possibilities हैं 16 all the 16 you substitute और उसको रखने के बाद then every time you have to find a characteristic equation like this which should be and then try to see कि उन 16 में से कितने में you get this kind of characteristic equation. अगर ये characteristic equation मिल रहा है then there is a possibility of oscillator and in that possibility what will be condition of oscillation? Then condition of oscillation would be simply A equal to B. Is that correct? Yes, sir. Then what will be frequency of oscillation? Root C. Right. Frequency of oscillation would be omega naught equal to under root C. Is that fine? And now what do we conclude? We conclude that in any electronic circuit, if there is a closed loop, right? If there is a closed loop, what we can do? We can break the loop. We can break the loop और लूप ब्रेक करके फाइंड आउट वीओ बाई. यहां पर हम लूप दो जगह से ब्रेक कर सकते हैं, देख रहे हो ना? वी कैन ब्रेक द लूप हियर, वी कैन ब्रेक द लूप हियर. दोनों में से किसी एक जगह लूप ब्रेक करो और लूप ब्रेक करने के बाद व्हाट वी डू,
Then we mark the input and we mark the output. And then what do we do? Find out VO by VI. And that will be what? NS by DS. Put that equal to 1. Close loop तभी तो होगा. Is that Yes, okay? sir. And when you put that equal to 1, then इससे आपको एक characteristic equation मिलेगी. वो क्या होगी? NS minus DS equal to 0. That will be the characteristic equation. ये जो characteristic equation है, this should lead you to a second order CE like this. Is that okay? Yes, sir. If you get this, then this coefficient made equal to 0 will give you condition of oscillation, and subsequently the remaining equation will lead you to get the frequency of oscillation. Is that right? Yes, sir. तो अब आप जो जनरल सर्किट वीन ब्रिज ऑसिलेटर की है इस स्लाइड में, इस जनरल सर्किट से जो 16 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उन 16 को आप एनालाइज करो और देखो उनमें से कितने ऑसिलेटर्स हैं. सारे नहीं होंगे, सभी में आपको एक सीई इस तरह की नहीं दिखेगी, इस टाइप की सीई सभी में Yes, sir. शायद ना दिखे. तो जितनी दिखेंगी सर वही अगर हम सर Z2 एंड Z3 को सर अगर हम सीरीज पैरेलल रखेंगे तो सर नहीं मिलेगा. राइट इनको Z1 एंड Z4. एग्जैक्टली. तो आप देखो उन 16 में से कितने ऑसिलेटर्स पॉसिबल हैं. आपकी बुक में एक ही दिखाया जाता है. आपके बुक में यू गेट ओनली वन सर्किट, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है. राइट. नाउ लेट मी टेल यू अनदर interesting this thing. Now suppose I have this thing which is K1 by S. Then I have another block which is minus K2 by S. अब बताओ दोनों क्या हैं ये? What are these two blocks? Non-inverting or inverting integrator. Integrators, correct, beautiful. Now if I connect this thing here, अब ये क्लोज लूप में है, can you find out whether it is an oscillator? कैसे पता करेंगे? सर बीच में ब्रेक द केवल लूप. ब्रेक करेंगे और फिर बाद हाँ, में ब्रेक द लूप ब्रेक कर दो और यहाँ पर लिख दो VI, यहाँ लिख दो VO and find out VO by VI. So what will be VO by VI? Minus K1 K2 by S square. Is that okay? यस सर. Put this equal to 1. Then what will be characteristic equation? S square plus K1 K2 is equal to 0. Is this oscillator? Yes, sir. Yes, it is oscillator. This is an oscillator. Only difference is that इसमें कोई condition of oscillation नहीं है. इसको जैसे ही आप एक inverting और non-inverting integrated loop में डालोगे, it will oscillate. It has no condition of oscillation. Is that right? Yes, sir. And what is the frequency of oscillation? Sir, root K1, K2. Root K1, K2.
सर जे नहीं आएगा? जे कहाँ से आ जाएगा भाई? सर -k1 k2 का अंडर रूट होगा। आप करके देखो फिर से एक बार। नहीं होगा सर, ओके ठीक। Right? So under root k1 k2 will be omega naught, and f naught will be by 2 pi. Is that right? Yes, sir. Okay. अब ये सर्किट आप देखो, I hope you identify this. पता है क्या है ये? Integrator. Right. And this is also an integrator. इसको मैं लूप में डाल दूं, so this will oscillate. G1, C1, G2, C2. This will oscillate. What will be omega? बोलो। Omega naught will be this. कर लोगे ये? Yes, sir. This one is non-inverting integrator, this one is inverting integrator. इसमें भी लूप ब्रेक करके VO by VI निकाल सकते हो. Is that right? Yes, sir. Okay. इसी सर्किट को आप एक दूसरी तरह से भी देख सकते हो. What is this circuit? Any idea? This is a two-port network and it is a gyrator. Gyrator, two port. और gyrator के सेकंड पोर्ट पे अगर हम कैपेसिटर लगाएं और इधर से देखें तो ये कैसा दिखता है? It looks like a grounded inductor. ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या होती Yes, है? sir. S C R square, where R is the gyration resistance. यहाँ पर भी अगर ये इसके पोर्ट 2 पे if I connect one capacitor, ground this, and then if I see from port 1 से अगर हम देखें तो क्या दिखेगा? This will look like a grounded inductor, जिसकी वैल्यू क्या होगी? SC G1 G2. Is that okay? Yes, sir. अच्छा, और अगर ग्राउंडेड इंडक्टर के पैरेलल में, दिस इज आइडियल इंडक्टर बाय द वे,
इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल इंडक्टर के पैरेलल में आइडियल कैपेसिटर लगा दें तो क्या बन जाता है? Oscillator. Oscillator. This will be, if this is C1, that means port 1 और इसके बीच में अगर हम एक दूसरा कैपेसिटर लगा दें, so this will become an oscillator. Is that right? Yes, sir. अब आप जरा ये जो दो सर्किट बनी है, कौन सी? ये जो लेफ्ट में बनी है ऊपर ये, और ये जो बनी है राइट में, इन दोनों को देखो, क्या दोनों सेम नहीं है? Yes, sir. They are the same. Is that right? Yes, sir. तो आपको ऑसिलेटर को कई तरह से देखने का मैंने तरीका बता दिया। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी बैंड पास फिल्टर लो और बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे एम्पलीफायर लगाओ और लूप बंद कर दो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो कि इस वीन ब्रिज ऑसिलेटर में दिखता है। आपको दिखता है ना? Yes, sir. राइट? अगर हम यहाँ पर सीरीज आरसी लगा दें और यहाँ पर शंट आरसी लगा दें तो ये सीरीज और शंट आरसी इज नथिंग बट बैंड पास फिल्टर। और ये एम्पलीफायर लगा दिया हमने और लूप बंद कर दिया, देन इट ऑसिलेट्स, इजंट इट? कंडीशन निकाली जाती है उसमें, किस कंडीशन पर ऑसिलेट करता है। फिर मैंने बताया आपको एक जनरल बताया, अगर कोई भी ऐसी सर्किट है और आप उसको लूप ब्रेक करके, इफ यू कैन फाइंड VO by VI and then put that equal to 1 and from that you find out the characteristic equation, if that equation is of the form as shown here, then you get the condition of oscillation and you get the frequency of oscillation. जरूरी नहीं है कि ये एम्पलीफायर हो और ये बैंड पास फिल्टर हो, राइट? For instance, now consider this circuit. I don't know whether you remember this circuit. Remember this? ठीक है? RRRC. R2, R1. And now I'm closing the loop. If I close this here, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इस वाले का? S minus 1 over RC divided by S plus 1 over RC, of course with minus sign.
This is identical, so you get the same thing. S minus 1 over RC divided by S plus 1 over RC with minus sign. इसका क्या होगा? Minus R2 by R1. So multiply all the three. Put that equal to 1. So what you get finally? R2 by R1 times S minus RC whole square divided by S plus 1 by RC whole square equal to 1. Can you solve and tell me what is the condition of oscillation and frequency of oscillation? Let me see who सर एक gives माइनस me. साइन और आएगा Huh? सर माइनस साइन Of course, minus sign, right. So now let me see who can give me the answer quickly. There are 83 students. Tell me what is the condition of oscillation and what is the frequency of oscillation? Yes? Of which circuit, sir? Hmm? Of which circuit? Piyush, are you sleeping or what? I have already told you this is circuit we are doing. Be available in the class. Yes? Anyone ready with the answer? सर Hmm? Omega Yes? naught will be 1 by RC under 1 by RC. Omega naught will be 1 by RC, right? And condition of oscillation? सर ए माइनस बी वाली फॉर्म नहीं आ रही R1 plus पक्का है, वन माइनस जरूर आएगी, आप ध्यान से करोगे आएगी. R1 plus R2 equals to 0. Hmm? हाँ सर सर Hmm. सर
R1 by R2 is equal to RC minus 1 upon RC plus 1. Yes. Condition of oscillation is R2 equal to R1. Is that correct? Yes, sir. किसने बताया ये सर? नो सर जीरो रहेंगे बाकी सर. हाँ वैभव? सर R1 इज इक्वल टू R2 करने पे तो पूरी इक्वेशन जीरो हो रही है. नहीं बिल्कुल नहीं, आप ठीक से करिए. सर न्यूमरेटर में एस का जो कोएफिशिएंट है वो R1 माइनस R2 आ रहा है और उसको जब जीरो करना है तो R1 और R2 इक्वल कर देंगे. So in this circuit, if you find out, it is going to be S square, ऐसा होगा कुछ R2 plus R1 है ना, plus S R2 minus R1, of course divide by RC, and plus R2 plus R1 divided by R square C square equal to 0. इस तरह से आएगा. And then obviously condition of oscillation is R2 equal to R1. And frequency of oscillation is obviously 1 over RC. Is that right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so having discussed this, now we can move over to okay, let me take you to another 555 टाइमर आईसी में हमने अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाया था. आपको याद होगा सर्किट कैसी थी, इस तरह की थी. This is 2, 6, 8, 4, 7, RA, RB, right? Then here 3 से हमने आउटपुट लिया था और 5 पे जो कंट्रोल वोल्टेज वाला पॉइंट है
यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं बहुत लो वैल्यू का। ये पिन नंबर 5 अगर आप ध्यान दोगे अंदर, तो ये जो ये पॉइंट्स हैं, इनमें एक तो ये है और एक ये है। इस वाले पॉइंट पे ये पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 5। सो इस पिन नंबर 5 से एक कैपेसिटर ग्राउंड इसलिए कर देते हैं कि इन केस इस पावर सप्लाई में समहाउ कुछ स्प्यूरियस फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं लाइन से, उस पावर सप्लाई से, तो वो कंपैरिजन लेवल को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ जो कंपैरेटर लग रहा है उस कंपैरेटर के कंपैरिजन लेवल को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसलिए ये ऐसा किया गया है। तो फ्लक्चुएशंस, जो नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको ये सप्रेस करने के लिए, टू सेंड इट टू ग्राउंड, this is pin number 5 where a low value capacitor is connected, right? So that is the okay, so that's the circuit, and it produces at pin number 3 what? At pin number 3 it produces rectangular waveform. This is time t1, which is decided by RA and RB and C, and this is time t2, which is decided by RB and C. Is that right? Yes, sir. Okay. Now, what is the role of pin number 4? Pin number 4 का रोल ये है, ठीक है, it's like enable pin. So whenever the 4 is connected to VCC, this waveform will be generated. Whenever 4 is not connected or given to 0, 4 पर हम दो वोल्टेज दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 0 या 1। 0 means ground, 1 means VCC. 0 means ground and 1 means VCC. Is that correct? So जैसे ही हम 0 देंगे तो ये वेवफॉर्म जनरेट नहीं होगी। जो ये वेवफॉर्म मिल रही है आउटपुट पे, ये नहीं मिलेगी, 0 मिलेगा। और जैसे ही 1 देंगे वेवफॉर्म जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और जो 3 से आउटपुट मिल रहा है, इसका लेवल क्या होता है? इट इज इधर 0 और VCC. Is that okay? Can you note this thing? दो चीज मैंने बताई यहां पर। पिन नंबर 4 पे इनपुट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 0 या 1। 0 मीन्स ग्राउंड एंड 1 मीन्स VCC. Is that okay? Yes, sir. और पिन नंबर 3 पे जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलेगा? इट विल बी 0 and 1. 0 means ground and 1 means VCC. Is that right? Yes, sir. Now suppose I have another stable multivibrator. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। सर हम 8 पे भी तो कर सकते थे। नहीं, 8 पर तो देना ही पड़ेगा कंपैरेटर जो लग रहा है। वो तो लगातार कंपैरिजन होता रहना चाहिए ना। 4 is the enable pin, right? So 2 and 6, then I have this 7. सर 4 सर प्रीसेट की तरह हो गया। Exactly. एट। एक और हमने अस्टेबल मल्टीवैल्यूटर बना दिया। बाय द वे 1 नंबर पिन ग्राउंड होगा। 1 नंबर पिन ग्राउंड होगा। This also goes to VCC.
आप चाहो तो ये दोनों VCC कंबाइन कर सकते हो, एक ही VCC लगा दिया आपने, इज दैट राइट? और पहले वाले में 4 इज कनेक्टेड टू VCC, फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में 4 कैन बी कनेक्टेड टू पिन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट वन, इज दैट ओके? Yes, sir. Now suppose here I have RA2, RB2 and this is C2. यहां पर जो वेवफॉर्म मिलेगी इसके पिन नंबर 3 से, ठीक है ना? अगर 4 हाई कब होगा? T1 के दौरान, पहले वाले के T1 के दौरान the input to pin number 4 will be high, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही पिन नंबर 3, पहले वाले पिन नंबर 3 से जब T2 आएगा उस समय इनपुट टू 4 विल बी 0। सर हमारी न्यू वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, जो पिन नंबर 3 से आउटपुट मिलेगा, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी इज लो, वेरी लो, और यहां जो फ्रीक्वेंसी बन रही है ये फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। मैं इसका वेवफॉर्म बनाता हूं, पहले वाले का बनाता हूं। सबसे पहले वाले का सपोज वेवफॉर्म इज T1 T2, ये पहले वाले का है, इज इट ओके? आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट वन। अब सेकंड वाले का आउटपुट कैसे मिलेगा? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। only is in this duration you will get the output from the second one. Is it agreeable? यस सर। अब मान लो दूसरे वाले का आउटपुट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ऐसी सेट की है, बढ़ जाएगी नहीं, ऐसा हमने RA2 और RB2 चूज किया है कि वो इस तरह का है। बढ़ जाएगी नहीं, हमने ऐसा चूज किया है। सर तो हमारी उसी रेंज में बढ़ेगी जहाँ पर हमारा आउटपुट फ्रॉम सर्किट वन हाई होगा। राइट। अब इसके बाद इस दौरान यू विल गेट 0 आउटपुट, you will not get any output because 4 is disabled. ऐसे लिख सकते हैं, पिन नंबर 4 of 2 is enabled. Pin number 4 of 2 is disabled. Is that right? यस सर। So you will get, और ये जो हाई और लो फ्रीक्वेंसी हो रही है ये इसकी वजह है कि हमने जो RA2 और RB2 है, आप इसको अगर उल्टा करोगे ना, if you try to connect pin number 3 of this to pin number 4 of this, तब आपको आउटपुट बहुत अनप्रेडिक्टेबल मिलेगा, क्योंकि इसकी RA, RB2 और C की वैल्यू हमने ऐसी चूज की है कि T2 is much smaller than T1 of the first circuit. T1 of first circuit is much smaller than T2 of than T1 of second circuit, then T1 of second circuit. This is what is important. Yeah, then T1 plus T2 of second circuit, ऐसे कह सकते हो। तो आप इसका उल्टा नहीं कर सकते कि आप इसके 3 को उधर लगा दो 4 पे और आपको वैसी मिलनी शुरू हो जाए। फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाई RA, RB and C. Is that right? यस सर। एक तो ये चीज बतानी थी आपको। हाँ सर एक्चुअली इट्स ऑलरेडी टाइम,
Okay, so we'll stop. Thank you, sir. So please make good notes and mark your attendance. And after marking the attendance, please leave the class. एक्सक्यूज मी सर। Yes, Ajay, bolo. सर एक चीज पूछनी है सर, मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो सर मतलब अगले हफ्ते सर दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। सर आप ये बता पाएंगे क्या, मतलब वो ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी, या जैसे मतलब अभी सिमुलेशन पे चल रहा है? क्या नोटिस आ गई है इसकी? नहीं सर, वो जो एकेडमिक शेड्यूल आया था ना पहले, उसी में लिखी हुई है, नोटिस नहीं आया सर कोई नया। नहीं तो क्लास होगी फिर तो कैंपस में होगी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। Those who have marked the attendance, please leave the class.